Good morning students, I am Amrita teacher and now today we are going to start the new chapter and that is adaptation in plants. In this chapter we will learn about the special features of plant by which they can survive in their habitat. So now let's start. Habitat. Habitat is the place where a plant can live and grow. Now on the basis of their habitat, all the plants are classified into mainly two types: terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants are those plants which live on land and the aquatic plants are those plants which live in water. Now there are various kinds of plants are live in different areas, like some plants are live in very hot areas and some plants are live in cold areas. Now how they can live in different climatic conditions. So they are live in different climatic conditions by the certain special features and that special features by which they can live in their environment is called adaptations. It means adaptation is the special feature in plants that help them to survive in their environment. मीन्स एडेप्टेशन एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ गुण है, एक ऐसा विशिष्ट गुण है जो कि प्लांट्स को उसके वातावरण के अनुकूल ढलने में सहायता करता है. नाउ एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Adaptation, first of all we will talk about the adaptation which are found in plants in plains. The plants which are found in plain areas grow in warm climate. They have several branches and lots of leaves. They shed their leaves in winter to protect themselves from the cold. Now look at these pictures. These are the pictures of banyan tree and neem tree. These are the examples of trees which are found in plains. Now adaptation in plants on mountains and hilly areas. So on mountain and hills the weather is very cold, so plants of these areas have adaptation that protect them from the snow. माउंटेन और हिल्स एरिया का जो वेदर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए वहाँ के जो पौधे होते हैं वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं ताकि वे अपने आप को स्नो से बचा सके, स्नो से प्रोटेक्ट कर सके. द ट्रीज हियर आर टॉल एंड स्ट्रेट एंड आर कोन शेप्ड. दिस हेल्प्स द स्नो टू स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस ईजली. सो वैसे प्लांट्स जो हिली और माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं वो टॉल और स्ट्रेट होते हैं और उनका जो शेप होता है वो कोन के आकार का होता है, कोन शेप्ड होता है, ताकि जो भी जब स्नोफॉल हो तो वो लीव्स को या फिर प्लांट्स को ज़्यादा डैमेज ना कर सके. जो भी स्नोफॉल हो वो उससे स्लाइड होकर नीचे गिर जाए और लीव्स और ब्रांचेज उससे डिस्ट्रॉय ना हो सके. नाउ लीव्स आर needle like and have a waxy coating to prevent any damage from snow. वैसे पौधों की जो लीव्स होते हैं वो needle like होती हैं ताकि उनके ऊपर जो भी स्नो हो वो सेटल ना हो सके और लीव्स को डैमेज ना कर सके. नाउ ऐसे प्लांट्स में फ्लावर नहीं पाए जाते हैं और उनके जो सीड होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिन्हें हम कोन्स बोलते हैं. सीड्स आर अरेंज्ड इनसाइड अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स. नाउ लुक एट these pictures. The pine, fir and cedar, these are the trees which are found in hilly areas and the shape of these trees are conical shaped, so that they are called as conifer. Now adaptation in plants in deserts. The temperature of desert is very high,
Plants can survive in hot and dry conditions. Leaves are modified into spines to reduce the loss of water. वैसे प्लांट्स जो डिजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं उनके लीव्स स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं, ताकि हम जानते हैं कि लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, और स्टोमेटा के थ्रू ही जो भी वाटर है वो इवेपोरेट होता है. सो टू reduce the loss of water, all the leaves are modified into spines and stem become thick and fleshy for storage of water. Now, as we know that the leaves are modified into spines, so the stem become thick and fleshy for storage of water, and the stem is green and contains chlorophyll for make the food for plants, because we know that the leaves are kitchen of the plants and they can make the food for plants, but here the leaves are modified into spines so that the stem is containing chlorophyll and they have make the food for the plant. Now roots are very long in order to reach out for the water deep in the ground. डिजर्ट्स एरियाज़ में वाटर की बहुत कमी होती है, इसलिए ऐसे प्लांट्स में जो रूट होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं ताकि वो डीप इन द ग्राउंड में जाकर वाटर को सर्च कर सके. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स, desert plants are cactus. Look at this. These are the spines which are modified leaves to reduce the loss of water. Now next is adaptation in plants of high rainfall areas. Due to high rainfall, they have lots of leaves. They do not shed their leaves, so that they are called evergreen plants. The example of plants which are found in high rainfall areas are teak, rubber, wheat and rice. Now the next one is plants in muddy swamps. A wet, muddy or marshy place is called swamp. Here the soil is very sticky and clayey and has a lot of water in it. वैसे areas में जो सॉइल होता है वो बहुत स्टिकी होता है, एंड वी नो देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, एंड इन दीज स्पेसेस एयर आर फाउंड, एंड बाय दीज एयर द roots can breathe. But in these plants that are found in muddy swamps, there were no any space between the particles of soil because they are sticky, so that there were no any air are found in these soils. So plant can breathe by the special kind of roots that are called as breathing root. So in these plants, that means mangrove plants are found in muddy swamps, and in these plants a special kind of roots which are grow out of the soil, and by which the root of these plants can breathe. Now they absorb the air that the tree needs. Now the other is plants in coastal areas. Water is salty, temperature is very hot, so in coastal areas water is salty and the temperature is very hot, and soil is sandy and air has lots of water vapor. So ऐसे coastal areas में जो वाटर होता है बहुत सॉल्टी होता है और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हॉट होता है, और एयर में वाटर वेपर्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे एरियाज़ में कोकोनट ट्रीज पाए जाते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, लीव्स formed of long stripes to tolerate strong wind, and we know that in coastal areas there is very strong wind, so that the plants which are found in coastal areas are very flexible and very strong, and the leaves are stripes, long stripes formed of long stripes to tolerate strong wind. Thick and shiny leaves to reflect strong sunlight,
and long roots which grow deep into the ground. So ऐसे plants के जो leaves होते हैं वो stripes के फॉर्म में होते हैं और बहुत ही शाइनी होते हैं ताकि सनरेज को वो रिफ्लेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हॉट होता है और ऐसे प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। नाउ इन दिस वे द प्लांट्स विच आर फाउंड इन लैंड कैन अडॉप्ट इन देयर एनवायरनमेंट एंड इन देयर हैबिटेट। Now in our next class we will learn about the adaptation which are found in aquatic plants. Thank you.